Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I wish you will be enjoying the best of health. I welcome you in my class that is in English for grade 4, and we are learning unit number 16, and its title is Self-Discipline. Yes, my dear fellow teachers, I have divided this lesson according to these lesson plans and according to these lectures. If you want to follow it, so you can follow as it is, and if you want to modify, so you can. It's up to you, okay? So our first lecture is lecture use of question words. We will learn about how to use question words, and we will cover a page number 128. And its SLO will be illustrate the use of question words learned earlier. Identify and use question words when, how many, and how much, etc. In lecture number 2, we will learn about use of can, may, should. And we will cover a page number 129 and 130. And its SLO will be illustrate the use of can, cannot, and may not. Identify and use should not, express permission and prohibition. And lecture 3 will be our under the comprehension process. We will learn about comprehension skills, and we will cover a page 124 and 125. And its SLO will be locate specific information in a calendar and a class timetable. Lecture number 4, we will learn about dictation words, that how we can learn dictation words and their spellings. And we will cover a page number 125. And its students' learning outcome will be copy and take dictation of words studied in class. In lecture number 5, under the reading title, we will read about tables and charts. We will cover a page number 131 and question number 9. And its SLO will be read tables and charts in textbooks. Lecture number 6, under the title of listening and speaking, we will discuss about different emotions that how we can express in question number 8 on page number 131. And its SLO will be demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in group to express joy, sadness, and anger. Lecture number 7, we will learn about letter writing, that how we can write a letter, and we will cover a page number 103 and question number 11. So in this way, my dear teachers, I have divided all lectures, total lectures. We will have 7 lectures, okay? So now we are going to start, and its SLO will be demonstrate the use of conventions of letter writing, address, date, salutation, body, and closing. Okay, now have you got? So now we are going to start, my dear teachers. Open book, my dear students. Page number 124, unit number 16, self-discipline. Okay, we are going to start. So its theme is life skills, and its sub-theme related sporting theme is organizing personal belongings. Okay, life skills क्या होती है बेटा? लाइफ स्किल्स वो होती हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका पता चलता है। इन स्किल्स के ज़रिए हमने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। और इसका सब थीम जो इससे रिलेटेड है वो ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल बिलोंगिंग्स। पर्सनल बिलोंगिंग्स का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमारी ज़ाती तौर पर हमसे मुंसलिक होती हैं, जो हमने खुद से करनी होती हैं, वो हमारी पर्सनल चीज़ों में आती हैं। सपोज़ जो आपसे रिलेटेड हैं, आपके क्लॉथ्स, आपके बैग्स, आपकी वो चीज़ें जो आप यूज़ करते हो, ओके, कोई और उनको यूज़ नहीं करता, आप यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें किस चीज़ में आती हैं? पर्सनल बिलोंगिंग्स में, हमारी पर्सनल चीज़ों में। और हमने उनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है कि समटाइम जब हमें वो ज़रूरत पड़े तो हमें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, हमें पता हो कि हमारी ये चीज़ फिक्स जगह पे रखी हुई है। ओके, तो आज हम इस चैप्टर में सारा इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन। और ये सारी क्या कहलाती है? सेल्फ डिसिप्लिन, कि हमने खुद को कैसे मेंटेन रखना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। A disciplined person is one whose lifestyle is systematic and organized. Such a person keeps her room clean and her desk neat, and she finishes all his work tasks in time. Keeping your belongings in order is not a difficult task.
When children grow, they should be made responsible for taking care of their own. So yes, on page number 124, my dear students, I have read that first passage, okay, first paragraph of this lesson. And what it is an opening paragraph, and it is telling us that a disciplined person, कौन होता है वो disciplined person? मीन्स नज़्म ज़ब्त और ख़ुद को ऑर्गेनाइज रखने वाला बंदा, जो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखता है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो वो क्या करता है, अपनी चीज़ें जहाँ वो रहता है, अपने टेबल्स, अपनी बुक्स, एवरीथिंग जो उससे पर्सनल रिलेटेड है, तो उनको नीट एंड क्लीन रखता है, अपना ऑर्गेनाइज करके उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखता है। और इस तरह के हमें अपने बच्चों को भी, माय डियर टीचर, आप अपने बच्चों को भी ब्रीफ करें, हमें अपने बच्चों को इन लाइफ स्किल्स के बारे में बताना चाहिए। जैसे जैसे वो ग्रूम हो रहे हैं तो उनको पता हो कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरह सलीके से सेटल करके रखना है। ओके, सो टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 125, फर्स्ट पैराग्राफ ऑन दिस पेज। You should know to keep your things in order. This will make you responsible in school and at home. The most common items you can start with are your clothes, socks, towels, shoes, cups and water bottles. Yes, so in first paragraph हमने क्या पता चला? You should know how to keep your things in your order. कि हमने अपनी पर्सनल चीज़ें कैसे हमने ऑर्डर पे रखनी है। The common items are, क्या क्या चीज़ें हैं उनमें? हमारे कपड़े हो गए, क्लॉथ्स कपड़े, सॉक्स, सॉक्स मीन क्या हो गया बेटा? जुराबें होगी जो हम डेली बेसिस पे अपने स्कूल पहनते हैं, टॉवल्स जो हम यूज़ करते हैं, पर्सनल होता है वो हमेशा, तौलिया, शूज़ हमारे शूज़, कप्स एंड वाटर बॉटल्स जो हम यूज़ करते हैं, ये हमारी पर्सनल चीज़ें, और हमने इनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। तो हम स्टार्ट कॉमन आइटम से ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, यू कैन यूज अ चेकलिस्ट मैथड, राइट एज 3 थिंग्स टू डू बिफोर गोइंग टू बेड और what to do on Sunday. Making and referring to lists together will develop your ability to plan tasks and manage your time. Yes, अब यहाँ वो इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि अपना चेकलिस्ट मैथड बनाए। चेकलिस्ट मैथड क्या होता है? उसमें ये आप लिखते हो कि मैंने मॉर्निंग में ये काम करना है, इवनिंग में ये क्या करना है, या लंच के बाद हमने क्या करना है, लंच से पहले हमने क्या करना है। तो ये सारा इसे चेकलिस्ट मैथड कहते हैं। मीन्स राइट एज 3 थिंग्स, कि 3 चीजें मैंने कब करनी है। टू डू बिफोर गोइंग टू बेड मीन्स रात को सोने से पहले मैंने 3 चीज करनी है। और व्हाट टू डू ऑन संडे, और संडे आ रहा है, वीकेंड आ रहा है, तो वो मैंने कैसे स्पेंड करना है। इज इट क्लियर? ये मैथड कौन सा मैथड कहलाता है? चेकलिस्ट मैथड, कि अपना सारा आप प्लान करते हो, और इस प्लानिंग से बेटा ये फायदा होता है कि हमारी कोई चीज स्किप नहीं होती, मिस नहीं होती। ओके, so let's see next paragraph. A mother does household work all the time. She cooks food, washes clothes, and takes care of her children. If you spare your mother by taking care of your belongings, she will love you more. Okay? अब क्या बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी पर्सनल चीजें सेटल करके रखोगे तो उसका फायदा किसको होगा? डेफिनेटली हमारी मदर को, आपकी अम्मी को। ओके, अब वो क्या करती हैं? सारा दिन हाउस होल्ड वर्क मीन घर का काम करती हैं, मसरूफ होती हैं ना, आपके कपड़े धोना, आपके लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना, बहुत से काम होते हैं जो हमारी मदर्स करती हैं। लेकिन अगर हम अपनी मदर्स को हेल्प करना चाहते हैं सपोज, तो ये नहीं है कि आप जाके कोई काम करवाना शुरू कर दो, तो अगर वो भी हो तो बेस्ट है कि अपनी मदर की हेल्प किया करें। लेकिन अगर अपनी ही चीज़ें आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, अपनी चीज़ों को साइड पे रखेंगे, प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, so it means you are also helping your mother in this way. Okay, it means you are also helping your mother and we must help our mothers. हमें अपने मदर की क्या करनी चाहिए? ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, इवन अपने बिलोंगिंग्स में, इवन हाउस होल्ड वर्क में भी। ओके, You should organize your schoolwork. Make sure that you are keeping notes and homework in separate places. Try to check your bag every night and get a box to store pens, papers and rulers, drawing pencils and markers so that you will have everything you need. Okay, अपनी स्कूल बैग को हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है? अपनी बुक्स अलग रखनी है, अपनी नोटबुक्स और जो होमवर्क है वो हमने अलग पोर्शन बना के रखना है अपने बैग में। और जो स्पेशली जो हमारे पेन्स, पेपर्स, मार्कर्स, सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हमारी हैं, हमारे कलर पेंसिल्स हो गई, उन सब का एक बॉक्स हो कि अगर हमें जब ज़रूरत पड़े
तो हम वो फ़ौरन वहाँ से उठा लें, हमें परेशानी ना हो कि पूरा बैग छान मारें, बैग निकाला हुआ होता है। अक्सर बच्चों ने नोटबुक्स बुक्स बाहर रखी हुई होती हैं कि मैं पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, मैं इरेजर ढूंढ रहा हूँ। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए अपनी एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो। जब आपको टीचर कुछ कहते हैं तो इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा बेटा। जब आपको टीचर कहे कि ओपन योर बुक, ओपन योर नोटबुक, इंग्लिश नोटबुक, उर्दू नोटबुक, और यू हैव टू यूज योर मार्कर्स, कलर पेंसिल्स, तो आपको पता हो, आप फौरन वहां से पिक करो कि मेरी तो यहाँ रखी है। ओके, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में आए। If a student is disciplined, he/she can manage all tasks efficiently and effectively. Lack of discipline might make it harder for children to learn. Similarly, organizational skills allow children to develop a plan and follow through, get work done. Work organizational skills can make learning harder. If you develop these skills, your partner and teachers would love it. They will support and guide you further. Organizing personal belongings can be a challenge, so try to develop this routine. You will definitely get its reward for the rest of your life. Yes, my dear students, so what this last paragraph is telling us. अब इस लास्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है? अगर एक स्टूडेंट जो अपनी एक एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखता है तो उसका फायदा पता है क्या होता है? तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है अपनी क्लास में भी। सपोज टीचर ने जो कुछ कहा वो फौरन उसने क्विकली वो सब किया कि उसे तो पता है कि मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है, मैंने अपनी बैग कैसे सेटल किया है, अपनी नोटबुक्स बुक्स हर चीज़ एफिशिएंटली बनी हुई है, और ये चीज़ उसे ज़िंदगी में आगे लेके जाती है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं अपनी चीज़ें, इवन अपना बैग, इवन योर पर्सनल रिलेटेड थिंग्स एट योर होम, इवन आपके घर पे भी जो चीज़ें हैं वो सारी जब आप ऑर्गेनाइज नहीं करते हो तो घर पहुँचते ही आपने सॉक्स कहाँ फेंक दी, शूज़ कहाँ फेंक दिए, और अपना यूनिफॉर्म कहाँ उतार के फेंक दिया। तो ऐसे नहीं करना है। ओके, तो इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है और इस पूरे चैप्टर में हमें यही सबक मिल रहा है बेटा, और ये स्पेशली आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। सो यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड दैट हाउ यू विल ऑर्गेनाइज योर पर्सनल बिलोंगिंग्स दैट बिलोंग्स टू यू। ओके, जो चीज़ें आपसे ताल्लुक़ रखती हैं, आप पर्सनली यूज़ करते हैं, कोई और उनको यूज़ नहीं करता, तो आप उनको ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि जब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, कोई भी रीज़न है, तो हम क्विकली वो काम कर सकें। हमें पता है, हमें ढूंढते ना फिरें हम। इवन मॉर्निंग में जब चीज़ें फेंक दो तो ढूंढते फिरोगे मॉर्निंग में, अभी मेरा सॉक्स नहीं है, मामा मेरी फ़लाँ चीज़ कहाँ है, मेरी फ़लाँ चीज़ कहाँ है। लेकिन जहाँ वो एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखी होगी तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, और ये चीज़ें आपको अपनी नेक्स्ट लाइफ में, फर्दर लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि बेटा हैबिट बनती है, एंड हैबिट इज़ आवर सेकंड नेचर। हैबिट ही हमारी नेचर बनती है। जो हम अपनी आदतें पालते हैं वही हमारी फितरत में शामिल होती हैं। तो कीप रिमेंबर दैट वी हैव टू डेवलप बेस्ट एंड गुड हैबिट्स इन अवर पर्सनैलिटी। ओके, नॉट जस्ट गुड, बेस्ट हैबिट्स। हमारी हैबिट्स ऐसी हों कि खुद ही हमारी एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो, हमारे इवन बात करने का स्टाइल, each and everything that is related to our personal. Okay, so keep remember, and I think you have got how we can organize. इस सबक के जरिए आप यकीनन समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे करनी है, इवन वो स्कूल में है या आपके घर में है। ओके, have you got it? I hope you have enjoyed, and tomorrow we will start our first lecture of this chapter inshallah. So see you soon. Till that, thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed.